दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। व्यूअर्स, यू आर बीइंग वेलकम इन योर ओन चैनल कानूनी चर्च। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लॉ सीरीज, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट एक्ट्स जो पार्लियामेंट के हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के हैं, डिफरेंट स्टेट्स के जो भी हैं, उन पे हम बात करते रहते हैं। तो पिछले दिनों मैंने आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बात की। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसकी एक्सपेंशन काफी हो चुकी है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट से, डिफरेंट जजमेंट्स। तो पिछले बार हमने ये किया था, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। नो डाउट, right to die has not been recognized as a fundamental right. It has been this Section 309 of IPC was kept intact by the judgment of the Supreme Court in Gyan Court judgment. Then in continuation of the earlier episode, at the end I have said in the earlier episode that I would discuss the provisions of this amended Motor Vehicle Act 2019. Earlier act is, basic act is Motor Vehicle Act 1988. What many things new have been added. We are concerned today. I want to discuss two terms which has evolved. One is Good Samaritan. Second is golden hour. Golden hour. This is what is Good Samaritan mean ordinary senses. एक नेक आदमी, एक हेल्प करने वाला आदमी, जरूरतमंद जो की मदद करने वाला, एक मददगार आप उर्दू में कह सकते हो। एक नेक आदमी जो दूसरों की मदद करता है विदाउट एनी कॉइन, विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो ये इसको हम थोड़ा सा ये दो टर्म्स कैसे इवॉल्व हुई, क्यों, कब आई, कैसे इस पे बात हुई, तो मैं इस पे आऊंगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। यू माइट बी नोइंग, मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा ताकि सभी लोग थोड़ा थोड़ा समझ लो, इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं और जो हमारे हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज कॉमन है, इंग्लिश, इस हिंदी में और उर्दू के वर्ड्स भी यूज होते हैं। तो इसी के बात करते हुए मैं आगे इससे बढ़ना चाहता हूँ। हिस्ट्री क्या है, आपने देखा होगा, रोड एक्सीडेंट्स जो इंडिया में हो रहे हैं, होते हैं और अभी भी हो रहे हैं, इसके बड़े कारण हैं। जैसे हमारे जो टाइम टू टाइम कमिटीज बनती रहती हैं विद रिगार्ड टू रोड सेफ्टी मेजर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है अपॉइंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो यही आता है इसमें, जो हमने देखा है, इसकी रिपोर्ट्स आती हैं कि कुछ हमारे ड्रंकन ड्राइविंग होती है, ओवर स्पीडिंग होती है, रोड कंडीशंस होते हैं। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका टेरेन बड़ा हिली है और ओवरलोडिंग होती है। जो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस फेक होते हैं बहुत लोगों के पास जो ड्राइविंग करते हैं। ये बहुत से कारण हैं और कहते हैं कि हर 1 घंटे में इंडिया में काफी तादाद में, जो कहते हैं कि 1 मिनट में 16 आदमी मरते हो, 1 घंटे में उसका आप अंदाजा लगा सकते हो। लाखों लोग हर साल मरते हैं। उनमें से आधे लोग क्यों मरते हैं? क्योंकि उनको मौके पे मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिकल हेल्प, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल असिस्टेंस नहीं देते। जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है, जो हमने हिस्ट्री जो पीछे हमने देखा है, अभी लॉ अवाल्व हो जाए उसमें मैं अभी बात करने जा रहा हूं। तो इसमें क्या है कि रोड साइड पड़ा है इंजर्ड, कोई बंदा उसको उठाने के लिए नहीं, हाँ ये कोई कहेगा एडवाइस देके 100 नंबर पे पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी को बुलाओ, पीसीआर में फोन कर दो, ऐसा कर। लेकिन कुछ लोग ये भी देखेंगे
कि चाहे वो हमारे कुछ पत्रकार भाई हैं, मैं अगर ये बात करूं, कुछ जो आजकल सोशल मीडिया में लोग आए हुए, वो वीडियो बनाएंगे, फोटोग्राफ करेंगे, लेकिन उसे उठाएंगे नहीं। उठाने वाली जिम्मेवारी वो कहेंगे कि ये पुलिस की है। जे तो इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आए हैं, जिन्होंने ये कहा कि ये, और यही बात हुई कि आर्टिकल 21 क्या है, लाइफ की प्रोटेक्शन है, डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए। तो लाइफ की प्रोटेक्शन, जो बंदा मर रहा है सड़क के किनारे, जो एक्सीडेंट से हो चुका है, तो इसमें दो बातें उन्होंने कही। पहले में जो प्रोविजंस जो आगे ही 1988 के एक्ट में है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के, उसमें 134 सेक्शन है, धारा है, वो क्या कहती है कि जो ड्राइवर होगा, जहां मोटर व्हीकल का, जो मोटर व्हीकल है उसका इंचार्ज होगा, जो दोनों में से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और तो उनका पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम उनका है कि उसका मेडिकल असिस्टेंस पहुंचानी। अगर वो, तो उसको अगर स्पॉट पे हो सकती है, नहीं तो उसे हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल है, और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। और भी बातें हैं, मैं शॉर्ट में रहूंगा। 134 और फिर 134 ऐड हुआ है, वो 2019 का है, वो गुड सैमरिटन की प्रोटेक्शन, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज, उनको सेव करने के लिए फ्रॉम द सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज से, वो इतने एक्सटेंड तक जा उसमें प्रोविजन, इन इसमें जो प्रोविजन ऐड किए गए हैं, उसमें एम्बॉडी किए गए हैं कि यहां तक कहा कि अगर गुड सैमरिटन से जो नेक आदमी लिफ्ट करता है, मेडिकल असिस्टेंट देता है, नॉन मेडिकल असिस्टेंट देता है, अगर उससे कोई नेग्लिजेंस हो जाती है और उस उठाने में, ले जाने में हॉस्पिटल तक, तो वो उसको प्रोटेक्शन है, उसके खिलाफ नेग्लिजेंस का केस नहीं बनेगा। तो मैं ये सेक्शन जो एडिशन हुआ है 2019 की अमेंडमेंट से, थोड़ा मैं पढ़ के दिखाऊं दर्शकों के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए। सेक्शन 34A, ये जो फर्स्ट क्लास है, ए गुड सैमरिटन विल नॉट बी लायबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल एक्शन फॉर एनी इंजुरी or to or death of a victim of an accident involving a motor vehicle act, where such injury or death resulted from good Samaritan जो negligence, आगे again continuations, in acting or failing to act while rendering emergency medical or non-medical care or assistance. For example, जो एक ऑर्डिनरी आदमी है, जिसको मेडिकल प्रोफेशन की नॉलेज नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, अगर वो उठाने, ले जाने में, फर्स्ट एड पहुंचाने पे ऑन स्पॉट कोई नेग्लिजेंस कर देता है, जो अपना हिट एंड ट्रायल मेथड वहां पे अपना अडॉप्ट करके, तो अगर उसकी मौत या कोई इंजरी एग्रावेट हो जाती है, तो उसकी लाइबिलिटी ना सिविल और ना क्रिमिनल बनेगी। तो ऐसे ही अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, अगर वो स्पॉट पे एड देते हुए, कोई उसको कैरी करते हुए किसी व्हीकल में, जहां हॉस्पिटल पहुंचाने में अगर कोई उससे नेग्लिजेंस हो जाती है, हो सकता है उसको ऑन स्पॉट ऑपरेशन में, जब मेडिकल ट्रीटमेंट किसी किस्म की भी, तो अगर नेग्लिजेंस, तो वो उसको प्रोटेक्ट किया गया है, गुड सैमरिटन की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो नेग्लिजेंस, तो एक्सप्लेनेशन भी साथ है इसका। तो इसमें और भी कहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर फॉर क्वेश्चनिंग और एग्जामिनेशन ऑफ द गुड सैमरिटन, डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जब कई बार आपने देखा हो, जब ये गुड सैमरिटन जो बंदा असिस्ट कर रहा है, ले जा रहा है, उससे बहुत क्वेश्चनिंग होती है। ये कैसे मिला आपको, कहाँ मिला, पहले तो हॉस्पिटल वाले, आपको पता ही होगा, हिस्ट्री जो है आप भी देखते होंगे, हॉस्पिटल वाले क्वेश्चनिंग करेंगे। पहले कहेंगे जाओ भाई अपना एमएलसी केस है,
first get a report registered to the nearby और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ये भी कह देते हैं कि पहले अपना एक बनाओ, स्लिप बनाओ आईपीडी की या ओपीडी जो भी उस पर सिचुएशन है, तो और फीस भी जमा करवाओ अगर ऑपरेशन उस होता है इतने लाख, तो बेचारा एक गुड सैमरिटन है, वो असिस्ट कर रहा है। तो लॉ चेंज हो चुका है। एक मैं जजमेंट पहले उस पर आऊंगा। तो पुराना उन्होंने एक जजमेंट थी पंडित परमानंद कटारा, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो इस उसमें जजमेंट में कहा कि जो मेडिकल जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस में जे 1989 का है कि प्रोफेशनल एथिक्स अडॉप्ट करने हैं डॉक्टर, जो एमसीआई के जो हमारी काउंसिल है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया, और अदरवाइज रूल भी है मेडिकल एथिक्स प्रोफेशनल जो है उसमें प्रोवाइड किया। फर्स्ट आपका ड्यूटी है जो भी हॉस्पिटल है डॉक्टर है कि आप उसको मेडिकल असिस्टेंस दीजिए। उसके बाद और अभी तो लॉ जो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आगे रेफर करने जा रहा हूं, उसमें तो फर्स्ट आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, चाहे वो दिस जे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है। ये कोई नहीं कुछ सब ये भी नहीं पूछना, हाँ साइमल्टेनियसली वो भी एमएलसी की जो केस होगा तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रिपोर्ट रजिस्टर एफआईआर लग जाएगी, जहां और आगे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट है कि उसको बचाना है। मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट इज द प्राइम कंसिडरेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड हु इज सफरिंग with the injuries. Or 1 hour, golden hour, it has evolved, law has evolved that first after injured get grievous or simple injury or fatal injuries, you may say, with the passage, if more bleeding is out of the injury suffered, then in this golden hour after the occurrence is very important. This 1 hour is referred as a golden hour. In this period, if medical assistance is make available to the injured, his life can be saved. This report on record is that half of the patients, half of the injured, half of the victims of the road accident dies due to non-availability of the medical intervention, medical treatment. This is they are not primarily operated, they are not lifted from the spot for the medical treatment to the hospital. So this is also a, now I will go by this is a case was registered. This is Save Life Foundation. Payush Tabadi is the head of this foundation, Save Life Foundation. They have he has this Save Life Foundation has instituted, filed a PIL, public interest litigation before the Honorable High Supreme Court of India in the year 2012. Then from the time to time during hearing, many directions were given by the Honorable Supreme Court of India. Finally, this case was decided in March 2016. Many guidelines were given by the Honorable Supreme Court of India in this judgment, and it's accordingly this Ministry of this road transport have framed the rules, have framed the rules for the safety, road safety measures, or particularly I have already referred that a bill was introduced, a bill for the protection of. This was when the case was pending. This Save Life Foundation case was pending in the Supreme Court of India, when directions are being made by the Supreme Court of India from time to time. In the meanwhile,
during the pendency of this, a bill was introduced. This bill, title of this bill was Protection from Civil and Criminal Liabilities and Miscellaneous Provisions Bill 2014. This was related to Good Samaritan, the guidelines, these rules of a SOP was also containing in these provisions. However, this bill was not passed in the Parliament. Then, after coming into force of this judgment, in this case, this Save Life Foundation case, Supreme Court of India has said till the proper legislation is there, law is amendment, the Motor Vehicle Act is there, or otherwise, government, Parliament makes a law making protection and protection of the Good Samaritan. In the meanwhile, the judgment of the Supreme Court, guidelines provided, the direction given by the Supreme to the Ministry of Transport and another Ministry of Health and Family Welfare. And other authorities also, directions were made so that the Good Samaritans be protected from being treated badly. And sometimes you might have noted that these Good Samaritan who are asked, many questions were asked during this treatment, or many times police calls them. But guidelines was given that the Good Samaritan should not be held after he shifts the patient to the hospital, or police should not insist and interrogate him with regard how this occurrence is. If he is voluntarily interested to become a witness or to stay till the medical treatment, medical intervention over until recovery of this injured is there, then he can at his own. But law protects him from all sides of maltreatment. He should be respected. Now, in this judgment also, Supreme Court of India has directed the Road Transport Ministry that a fund should be created, award should be given, they should be rewarded, so that people, NGOs come forward for the safety of these people who are victims of the road safety, road accidents. Now, law has involved. But I have already said that this petition, Article 21, was invoked by this Save Life Foundation, and Supreme Court of India has also added this Article 14. Why the victim of a road accident injured should not have a equality of treatment, medical intervention? Why he should not be like any other patient or injured who gets this medical assistance? Then Article 14 and Article 21, protection of life. By the life of the injured be not saved, he should have a dignified life. His life should be protected only for a reason that he has, at that time, he has no money. He should not be deprived of the medical facilities, medical treatment, medical assistance. All these considerations, I have earlier, in continuation, I am saying Article 21 is very important. And it's it has been, its this interpretation has been
expanded by the Supreme Court of India in its very judgment. And this judgment of Save Life Foundation is also based on Article 21, and there is also reference of Article 14. There should not be discrimination with the person who's at the relevant time has no money. Then Supreme Court of India has said he should also be equally provided medical assistance, no doubt, because first we are concerned with his immediate intervention, and the professional ethics of a doctor, a hospital also require that first there should be a medical treatment, and afterwards all formalities of this accidental case on the relevant provisions of Indian Penal Code or some other act to be followed. And my concern is that today, why I have discussed this, because many deaths have been caused due to non-assistance to the roadside accidents victims. Then my concern is, I have in brief now I am going to summarize what I have said. That Article 21 provides for dignified life, protection of a dignified life, and Supreme Court of India, while invoking its inherent jurisdiction, in this case public interest litigation, Save Life Foundation case, has given a judgment, and now it has become a law of land, because under Article 141 of Constitution of India, judge made law till the necessary amendment now available in this Motor Vehicle Act. And this I have already read over this Section 134-A. This section also of Motor Vehicle Act, this section also provides that government, the concerned ministry, has to frame rules for safety, for protection of this Good Samaritan from civil and criminal liability, and particularly a provision has been now available in the amended Motor Vehicle Act 2019, where a Good Samaritan, if negligence is committed in assisting the patient on spot or in carrying the injured to the hospital, if he dies, so he should not be prosecuted. He should not be booked, or otherwise criminal proceeding should not be taken against him for criminal negligence or civil negligence. He is protected from criminal and civil liability. तो आर्टिकल 21 मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वजह से आज हमारे और इस आने से काफी लाइफ सेव हुई हैं। और जैसे मैंने कहा कि इन गुड सैमरिटन को हमें इनकरेज करना चाहिए, एनजीओज इन्वॉल्व होनी चाहिए रोड सेफ्टी में, जो मदद करें लेने में, और इनको टाइम टू टाइम हमारी जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट सरफेस, इनको हमारे यहाँ ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे जो हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे अथॉरिटीज है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, दूसरी पुलिस है, इनको टाइम टू टाइम लोगों को अवेक करना चाहिए, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड सैमरिटन बने और उनको गोल्डन आवर के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, ताकि और जो भी इनको रिवार्ड वक्त देना चाहिए, जो अच्छे किसी को लिफ्ट किया है, किसी की लाइफ सेव की है, और टाइम टू टाइम पे इन पे नज़र भी रखना चाहिए प्राइवेट और हॉस्पिटल्स पे, और पुलिस को भी चाहिए
कि इस सभी चीज़ों को जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है सिविल और हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी जो स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल को, इन लोगों को भी आगे आना चाहिए। इन जो हमारे ये जो लॉज हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, इनको प्रॉपरली इन्फोर्सेबल करने के लिए इनको जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन। तो मुझे दीजिए आजाद। तो दर्शकों, तो अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है, मैं सिंपल लफ्जों में बात करता हूँ और काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है, इस थोड़ा इसको रिसर्च करना पड़ता है जजमेंट पढ़ के, जो सिंपली 15-20 मिनट 25 मिनट की बात जो करते हैं। तो यही है मेरा चैनल कानूनी चर्चा को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।